So hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. We have been always saying I'm the Best Mom is committed to make your motherhood a joyful experience, and I'm the Best Mom brings a collective knowledge and information for your betterment from the specialized doctors and experts. And how a doctor thinks and how you think, and it's very important to understand. And we always carry that butterfly effect because every life is precious, and we are here to take care your smallest of the queries to the biggest concern. We are in the continuation episode from last week with a cover page, cover story on the eye health of our children and ourselves. And we have been seeing with plenty of questions last week, where it started from like we are seeing the digital exposure of the children with the eye are very, very high in last 1.5 years from the beginning of the pandemic. And beyond that, we also covered particularly ICU graduate newborn to the children who are growing and how it is important to take care of their eye health. Today, with the continuation, we should be knowing more from Dr. Kopal Mithal. He's a vitro-retina specialist from Mirat with Dr. Anuj Rastogi sir on what you should be knowing more about your eyes. If you have any question, please post the session from Dr. Anuj Rastogi and Dr. Kopal Mithal. Welcome to you both in the. Thank you, Deepthwani. Thank you. And welcome, Dr. Kopal Mithal, in today's platform. Thank you to the whole team of I'm the Best Mom. Yeah. In last episode, you have told us for regular eye checkup of children. And first, you told us everybody who is going into the school or in the preschool time, they should get their eye checked. तो डॉक्टर गोपाल ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैंने इसको कोरिलेट भी करा कि बहुत सारे बच्चों की स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस खराब हो सकती है अगर उनको साफ नहीं दिखाई दे रहा है. मे बी दे मे हैव मायोपिया, मे बी दे मे बी हैविंग एस्टिग्मेटिज्म, या उनको लेजी आई हो गई है या कुछ और आई की प्रॉब्लम है और उनको कम दिखाई देता है बिकॉज दे कांट एक्सप्रेस इट. उन्हें बोलना भी नहीं आता और एक्सप्रेस करना भी नहीं आता और ये कोई सडन फिनोमेना नहीं होता, वो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट हो जाते हैं. बट दे कांट सी ब्लैक बोर्ड, दे कांट लर्न द वे अदर
their other peer group is learning. बहुत से बच्चे गलत डायग्नोसिस का शिकार हो जाते हैं, जैसे ADHD इज वन डिसऑर्डर, कि बच्चे को दिखाई सही नहीं देता, वो क्लास में समझ नहीं पाता, तो वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो जाता है, एंड देन पीपल थिंक दे आर हैविंग ADHD. सो आई का चेकअप इतना इम्पोर्टेंट है. ये तो मैं टोटली एग्री कर गया आपकी उस टॉक के बाद. बट I want to know how they will adopt for the specs if they are having some refractory error at the age of 3 year or 3.5 year. How will you motivate them to have that spec, or what parent can do, and how can they ask them to wear spec, because it is they are very naughty and they are very not very adoptive also for the same. I think children are very intelligent. They're naughty, of course, they should be naughty. Childhood is all about naughtiness, but they're very smart. So when a child has high refractive error, and we are talking about from age of 3 months or so, beyond 3 months. Normally, when the baby is born, the eye is very small. The potential vision of the babies in less than 3 months is only 2 meters, because God has given them a very high power, smaller eyes. And then in the next 3 months after birth, the eyes grows to its normal size, and power by end of 3 years reaches 0. Beyond that, it might remain a little positive, which may lead to long sightedness, or what we call hypermetropia, or it might grow beyond the normal length and become myopic, or what we call short sightedness. So, and we also know that the brain of the child is like plastic, like clay, or like dough which we play. The child's brain is moldable. This is the time when child is observing and learning. So this is the time when it becomes, it gains strength, it reaches its maturity. So the child needs to see very clearly. And nature has its own way to meet the requirements. The eye normalizes between 3 months and 3 years. At any point, if a high refractive error is leading to poor vision according to age, or habits like squinting, we need to correct it, because a squinting eye does not see and it leads to amblyopia. So any kind of squinting, which is more than 50% of the day beyond 3 months of age, needs correction. And 95% I can promise you it is by simple mechanisms, by exercise or glasses, and not by surgery. We try our best till 8 or 12 years of age. We correct their squints by non-surgical methods. So they are very simple. They are by exercises or by spectacles. And as you said, how do you make them wear specs? Children are so wise that if they see their mother's face clearly with their spectacles, they very soon accept it. For the first few days, they will think, ye kya foreign body bandi? They will remove it, they will throw it, they will break 2 pairs of glasses. Don't go for very expensive glasses, but get them the correct power. Be persistent. Sometimes we tell them सारे siblings को और दोनों parents, grandparents को चश्मा लगा दो, 0 power का ले लो. It will motivate them to wear glasses. Sometimes we ask the child on table, before telling them the bad news that you have got specs, we ask them, आप कौन से color का glass पहनना चाहते हो? Pink, blue, red, orange, and we'll tell them to pick up their favorite color. So all this motivation has to come in play. The child deserves to get the correct power, see clearly with not one or both, but separately both eyes, so that we can enjoy the phenomena of stereopsis, which is there only in humans and not animals. You see, like a human can hit a tennis ball accurately, no animal can do it. The reason is God has given us the power to use both eyes together. That can be used only when the child sees perfectly well with both eyes, with good coordination since a young age. So for that, I say that if the pediatrician or parents notice that there is any misalignment in the eyes, please report early, even at age of 3 months. And if you see that there is asymmetry of vision, which may be noted in screening camps at school, or in the pediatrician's hospital, or in the optometrist clinic where people go for glasses, or an ophthalmologist, it needs to be corrected and followed by exercises to bring both eyes into alignment and achieve equal vision in both eyes.
So it's imperative the child gets good vision in both eyes together, with or without help of glasses. Right, आपने समझाया, and very nice to know, and we can ask parent to have glass, and but this is must, you should go and get your child checked for eyes. अगर उसका विजन अच्छा नहीं है, देखिए हमारी 5 इंद्रियां हैं, टच, सूंघना, टेस्ट करना, देखना, तो अगर इनमें से एक भी अगर शॉर्ट रह गई तो फिर उससे लर्निंग पे फर्क पड़ जाता है। एंड टॉप ऑफ दैट, इफ योर चाइल्ड इज हैविंग मायोपिया एंड यू आर नॉट यूजिंग ग्लास, then his number is going to deteriorate faster. And grades also. So as we just discussed, so you see a brilliant child, good genes and everything, good environment at home and school, and if they don't get adequate power to see clearly to the blackboard, their notebooks, and they're not able to cope up with their classwork, homework, and their grades start dropping, so this is the time, this is a warning sign for parents to get the child screened for any refractive error and give them good vision, which can help them do scholastically well as good hand-eye coordination, which can help them excel in art and sports also. Correct. So eye checkup should be started from at least from preschool age. Otherwise, normal checkup, you are going to your pediatrician or neonatologist, they are, ask them to check their eyes also, and just follow their command. And as Dr. Kopal has told, if a child is having crossed eyes or crossing eyes sometime, in less than 3 months of age, if it is crossing more than 50% of the time of the day, then you should report to the doctor immediately. Otherwise, after 3 months of age, you can go, and if it is persisting, then you should go and get it checked by ophthalmologist. Right. जो आंखों के अंदर जो भी मैम ने बताया, न्यूरोप्लास्टिसिटी और डेवलपमेंट जो आई का है वो 6-7 ईयर तक रहता है, उसके बाद उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो अगर योर चाइल्ड इज हैविंग क्रॉस आई और strabismus or lazy eye, then you should immediately report to the ophthalmologist and get it treated in a simple manner. इसके लिए कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, ऑपरेशन इज अ लास्ट रिसॉर्ट। अदरवाइज डॉक्टर जो है आपके वो थोड़ी एक्सरसाइज से या पैच ट्रीटमेंट से या एक एट्रोपिन नाम की दवाई आती है उससे वो कस्टमाइज कर सकते हैं बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से। एक डॉक्टर कोपल, जब मैं छोटा था और धूप में बैठ जाता था या धूप से हटता था तो मुझे एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता था और कई बार मैं उसे फॉलो करता रहता था। व्हाट इज दैट? That's a natural part of the eye. Actually, the eye body is formed by a gel. It's called vitreous gel, and as you can see, it's a natural thing rather than an artificial gel. It is made of cells and fibers. So everybody has that component in his eyes. And if you pay attention to it in natural light, you will see millions of these red, black spots and fibers. If in a visible increase in floaters, these are called floaters. Visible increase of floaters is usually complained of by elderly people, like 55 plus or no. But if your child is complaining of it, if at all, it can be an attention-seeking way of seeking attention of parents or doctors. But do report to a doctor, get your retina checked, because this can be an early sign of pathologies also, be it uveitis, some eye tumors also. So, and sometimes of very problematic disease like retinal detachment. The earlier such diseases are picked up, it's easier for us to treat them. So if your child does complain of them, at the most get a checkup. If they're normal, the doctor will tell you. And if it's an early sign of any pathology or disease, the doctor can pick it up and treat it in an easier form. So no need to fear these symptoms. Report to your doctor and get your child checked. These are known as floaters, I suppose. Yes, yes. अब अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनकी मदर कहेंगी इसके जो आंसू नहीं आ रहे हैं, या कहेंगी कि इसकी आंख से पानी बहता रहता है। सो when should they go for the treatment and what should be the protocol for that? So the physiology is जो normal process होता है, बच्चा के आंसू पहले महीने में नहीं बनते। 1 महीने के बाद tear secretion start होता है। एक पैसेज है जो आंख के मीडियल पार्ट से यहाँ से शुरू होता है, नाक के पिछले भाग में खुलता है दोनों तरफ।
और नाक में कोई भी जो आंसू बन रहे हैं वो बाहर ना झरें, टपके ना, इसलिए एक्स्ट्रा ड्रेनेज नाक के अंदर ड्रेन हो जाता है। ये है नेजोलेक्राइमल डक्ट। नेजोलेक्राइमल डक्ट ज्यादातर बच्चों में पहले महीने में खुलती है, पूरी कैनलाइज होती है, कार्टिलेज होता है जिसके अंदर वो नली पूरी खुलती है। कभी कभी एक पतली सी झिल्ली उसके लास्ट में कहीं रह जाती है। ये एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि पहले की डिलीवरीज में दाई माँ ऐसे मसाज करती थी बच्चे को और वो झट से वो झिल्ली खुल जाती थी। ये सब प्रैक्टिसेस अब इनकी साइंस और रिकमेंडेशंस बदल गए हैं। बट अगर 1 महीने पे जब आंसू बनने शुरू होते हैं उससे कुछ पहले एक आंख या दोनों से, एक में ज्यादा दूसरे में कम या दोनों से पानी झरता रहता है, बहता रहता है, बच्चे की आंख गीली रहती है, बार बार ढीड़ आती है, तो ये एक इन्फेक्शन या नेजोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का साइन हो सकता है। क्योंकि बच्चे के टिश्यूज इस समय बड़े मुलायम है, कुछ सिंपल मसाज, जैसे हम एक क्रिगलर मसाज सिखाते हैं इस तरह के नासूर पे मालिश की, तो वो अगर मेहनत से शुरू में ही, मदर बहुत बिजी होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर दें, फादर भी कंट्रीब्यूट करें, जितना जल्दी हो ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। जबकि अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, टिश्यूज फर्म हो जाते हैं, फाइब्रोज हो जाते हैं, तो हमें सिलाई डालने का ऑपरेशन करना पड़ता है। और यही लक्षण है, बड़ा सिंपल, एक आंख में ज्यादा या दोनों में पानी आना, बार बार ढीड़ आना, तो ऑफ द काउंटर दवाइयां डालने के बजाय एक बार चेकअप करा लें। सिंपल, हम भी ऑपरेशन नहीं बताएंगे, मालिश बताएंगे और वो उससे ठीक हो जाएगा। करेक्ट। एक जो आई डोंट नो अब क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जब हम पहले जाते थे तो पहले हमारी आंख में दवाई डाल के बैठा दिया जाता था क्लिनिक पे, सर को फैलाया जाता था, फिर आई का चेकअप होता था। व्हाट इज दैट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? सर बच्चों में एक फिनोमेना दिया है, ये भी कुदरत ने ही दिया है, अकोमोडेशन। अगर बच्चे की 3-4 की भी पावर है, बच्चा तो साफ देखना चाहता है और वो पूरा जोर लगा के आंख की मसल्स पे साफ देख ही लेगा। तो कितने बच्चे आके बताएंगे 6 विजन, और जब ये दवा डलेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्हें साइक्लोप्लिजिक्स कहते हैं, तब निकल के आता है इसकी तो बहुत हाई पावर है। जब बच्चा इतना जोर लगाता है तभी कभी कभी वो स्क्विंटिंग में चला जाता है। तो साइक्लोप्लीजिया एक तरीका है जिसमें 7 साल से कम की उम्र के बच्चों को 45 मिनट लगता है, कभी कभी 3 दिन तक भी दवा डालनी पड़ती है घर पे, जिससे अकोमोडेशन को बिल्कुल रिलैक्स करके उसकी ट्रू पावर निकाली जाए, जिससे वो आइस पे बिना स्ट्रेन करे साफ देखे, उस तरह की नंबर उसे दिया जा सकता है। इनका इफेक्ट बहुत टेम्पररी होता है। ज्यादातर हम स्कूल गोइंग बच्चों को 2 दिन की ड्रॉप डालते हैं, तो हम ऐसे में उन्हें फ्राइडे बुला लेते हैं, मंडे तक दे कैन गो बैक टू स्कूल। ओके, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। पेरेंट्स इस बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों हमारे तो कभी डाली नहीं जाती ड्रॉप, इसकी क्यों डाली जा रही है। राइट, एंड व्हाट इज द स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन? स्लिट लैम्प Sir, I actually, as I told you in the last meeting also, it's a transparent organ. बहुत कुछ हम उसी आई के अंदर से अंदर ब्रेन तक भी और ब्लड वेसल्स तक भी देख सकते हैं। तो स्लिट लैम्प एक माइक्रोस्कोप है, ज्यादातर माइक्रोस्कोप्स ऑपरेशन थिएटर में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये ओपीडी में होता है, जिसमें हम 10 गुना, 16 गुना और कभी कभी 20 गुना भी बड़ा मैग्नीफाई करके, छोटा सा भी कण कॉर्निया पे गिरा है, कहीं कोई एक कीड़ा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई सूजन के कण है, सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स जो माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट देखते हैं, हम वो तक देख सकते हैं, उनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये क्लिनिक में ओपीडी में कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा कण, इन्फेक्टिव मटेरियल या कोई खतरनाक चीज आंख में नहीं रह जाए। और ये इट्स सच अ सिंपल एंड सेफ मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन फोटोग्राफी कि छोटे बच्चों में भी हम कर लेते हैं। राइट। अच्छा, अगर बच्चे को फैक्ट्री एरर नहीं है, लाइक उसने 1 साल पहले चेक कराया और उसको पेरेंट्स के हिसाब से सही दिख रहा है, तो even then he requires to visit to ophthalmologist for the checkup. Recommendations are annually because see, children are precious, sir. They are the future of our world. हर फैमिली में आजकल 4-5 बच्चे नहीं, 1-2 बच्चे हैं। So it's important they do wonderful scholastically, उतना एजुकेशन में स्पेंड करते हैं पेरेंट्स, so it's worth if annual examination बच्चों का होना चाहिए। But at the most, as you said, just before they start school and as soon as if any problems are reported, हाँ अगर बच्चे का रेगुलर चेकअप्स पे कोई पावर नहीं आ रही है, पेरेंट्स में कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, समटाइम्स वी टेल देम दैट तब ले आइए जब कोई परेशानी है। अदरवाइज एनुअली an examination for all children is recommended. And what are the causes of
eye pain in a child? Sometimes they complain of eye pain. Sir, eye pain can be very trivial also, कि आंख में ड्राइनेस हो गई, कंप्यूटर ज्यादा देख लिया या आईज थक गई, आई स्ट्रेन हो रहा है, चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत है, और इट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑल्सो दैट आई में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, यूवीआइटिस है या इन्फेक्शन है. So eye pain has to be taken seriously, and it can't be treated even with telemedicine or telephonic conversations. If a child is reporting eye pain, we should take it seriously, get a comprehensive eye checkup. If at all anything is picked up, it can be relieved. Even if eye movement is okay, even then they should come to the doctor. Eye movement is normal. Eye movement is can be affected only when some inflammation is happening around the eye also. So that sounds like a very severe situation like an orbital cellulitis. But eye pain, if it's as simple कि eye को rest करके आराम मिल गया, आँख को थोड़ा आराम दे दिया, अच्छी नींद ले ली, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज कम कर लिया, आँख धो ली, आराम मिल लिया, lubricants में डाली, आराम मिल गया, then you don't need to go to a doctor. But if the child is persistently talking about मुझे आई के आसपास यहाँ पेन हो रहा है, जोर पड़ रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, साथ में अगर अलार्मिंग साइंस है, आंख लाल हो या आंख पे कुछ सफेदी दिखे, then definitely go to a doctor. It can even be a corneal infection which can lead to permanent blindness also. So ऐसे कोई लक्षण है तो जरूर डॉक्टर पे जाएं. Are there eye causes also for headache? जैसे बच्चे अक्सर headache कहते हैं और डॉक्टर कहते हैं इसकी eyesight check कराओ. So what is the correlation? What is the reason? Is the important cause for headache in children? Refractory error or something like that? Sir, headache can definitely be sign of eye strain also, and sometimes so if a child is complaining and persistently of a headache, especially in the evening after school work and homework is done, so as first thing it can be an attention seeking thing, so keep inquiring about it from your child. Then if it is particularly happening after reading, then as I told you, बच्चे बहुत सारी पावर छुपा जाते हैं, साइक्लोप्लीजिया से हमें वो पावर निकाल के उनकी आईज को रिलीव कंफर्टेबल, अच्छा विजन भी और कंफर्टेबल भी रख सकते हैं. So refractive error can be a cause. Then sometimes young children or teenage children also, headache if it is causing from some disease of the brain, a simple eye checkup can detect an increased intracranial pressure also. So even before an MRI is advised for an headache, it's good to have an eye checkup. Okay. कभी-कभी blood pressure भी बढ़ा हुआ निकल आता है बच्चों को. Sir, right. Early detection of a hypertension in a child. Okay. What are the symptoms of eye strain? Sir, one headache हो गया, एक तो headache ही हो गया. Sir, Other symptom of eye strain. headache which is particularly happening after looking at a screen for a long time or long reading hours, or when child has a lot of reading workload. Then other thing is double vision होना. बच्चा कहेगा कि ये लेटर्स ओवरलैप कर रहे हैं और एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, या इंटरमिटेंट ब्लरिंग, थोड़ी देर के लिए देखा साफ हो गया, थोड़ी देर बाद धुंधला हो गया, which we all experience when we do a lot of computer work. So these are the signs of eye strain, and squinting also is another sign. Okay, it will be temporary squinting. And what is blurred vision? So anything short of perfect is blurred vision, especially for children, because we should have intolerance to suboptimal vision for children. Suppose a child comes to me. Just today I was seeing a child who came to us 3 years back with one eye this much vision, another eye perfect. So reason we found was this eye had a power and the other didn't. And the child had not used it till he became 6-year-old child. So since then we have given him power. We have even given him a contact lens so that the discrepancy between the glasses doesn't give him problems. And now this child has achieved regained 90% of vision in that other eye. So this could have led to amblyopia. So I'm sorry, I lost your question. I started telling a story. Please ask your question again, sir. What are the symptoms of eye strain? I was talking about eye strain. So eye strain, if there is asymmetry between the power of the vision, or there's a high refractive error and the child is training to see clearly, or there is overload also, overwhelming work. As we say that maybe the secondary school children
have to work, do their online classes also, their homework also, their recreation also on the screen. So if children are overwhelmed, they are not sleeping well at night, also they're watching a video for entertainment on the mobile, that can also lead to eye strain. Okay. And what is this computer vision syndrome? So usually we used to see it in the technical sector people who used to work like 16, 18 hours a day, or MBBS students or law students. These days we are seeing it a lot in children also because of excessive screen use. So what happens is when we look at a computer terminal, which we call that as screen these days, screen time, you know. So when we look at a computer terminal, be it television, mobiles or laptops, the blink rate of the eye goes down, and the eye, we tend to stare. So this decrease in blink rate leads to eye dryness and the breakup time of the eye. The tear film breaks and eyes develop discomfort. So as I told in the last meeting also, let me repeat it. This is for all age groups, for children as well as adults. When you look at a screen, follow the rule of 20-20-20. हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट पे देखें, आपकी आंख की मांसपेशियों को आराम मिल जाएगा। पलक जानबूझ के खूब झपकें, जिससे आपकी आंख की नमी बरकरार रहे। एयर कंडीशनिंग और सीधे कूलर की हवा के सामने ना बैठें, उसको मिनिमल रखें, और ह्यूमिडिटी रूम की अच्छी रखें। जरूरत पड़ने में अगर तब भी आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स यूज करें। जब हम डॉक्टर के पास आंखें चेक कराने जाते हैं तो वो अक्सर बोलेंगे कि स्फेरिकल इतना है, सिलेंडर इतना है, और स्फेरिकल ही है, सिलेंडर नहीं है। व्हाट इज दैट? एंड अगर सिलेंडर की जरूरत है, अगर हम सिलेंडर नहीं डलवा रहे हैं, अगर उसमें एब्रेशन हो गया तो उसके क्या आउटकम आएंगे? सर एक्चुअली आई हमें जितनी दिखती है उससे पीछे 2 सेंटीमीटर और लंबी है। इट्स लाइक अ बॉल एंड इट्स लाइक अ प्रोलेट बॉल, मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। और उसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक आगे का और एक ये 2 एक्सेस होते हैं 1 and 2। सो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में पावर का एक perfect ratio होता है। If this is 0, you have no refractive error. If both of them are symmetrical, and this can be because of a shorter eye or a longer eye, then you have hypermetropia or myopia. But if the difference between these two axes, जैसे एक पे 0 एक पे 2 है, तब आपको 2 का सिलेंडर है, जिसकी वजह से आपको जो डिजीज रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है वो एस्टिग्मेटिज्म है। आजकल का जिस तरह का वर्कलोड है हमारा, आपका, बच्चों का, टेक्निकल टीम्स का, प्रोफेशनल टीम्स का, वहां पर ये सिलेंडर ना केवल धुंधलापन करता है, बट ये आई स्ट्रेन भी करता है, क्योंकि आइज की मसल कॉन्सेंट्रेट स्ट्रेन में होते हैं, उन्हें घूम के साफ देखने की जरूरत पड़ती है। तो व्हेन वी यूज दैट सिलेंडर, even in presence of perfect vision without glasses, the eye strain decreases, eye comfort increases and the clarity increases. एक बार को मायोपिया को मैं अंडर करेक्ट कर दूंगी, मायोपिया को मैं हमेशा अंडर करेक्ट करती हूँ। अगर बच्चे की पावर 6.5 है, मैं उसको, जहाँ उसका पढ़ने का काम ज्यादा है, बेशक उसको दूर की पतंग कम दिख जाए दूसरे बच्चे से, लेकिन उसकी पढ़ाई में उसको आई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। मायोपिया आई कैन अंडर करेक्ट, बट सिलेंडर जब अगर है और आपका विजन इफेक्ट हो रहा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो उसे पूरा करेक्शन दिया जाता है, जिससे आप साफ भी देखें और आंख पे जोर ना पड़े। तो एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे अलग अलग तरह के रिफ्रैक्टिव एरर हैं। और बच्चों के मामले में जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं परफेक्ट विजन विथ मिनिमम आई स्ट्रेन, वहां पर ऐसी कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। सो आपने बताया कहते हैं इसको, और अगर सिलेंडर अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो वो आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो आपकी विजन आगे जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मायोपिया? बिकॉज मायोपिया एवरीबॉडी knew about it. So what are the treatment option for myopia? One is spectacles, चश्मा हो गया, कॉन्टेक्ट लेंस हो गए, तीसरा लैसिक लेजर हो गया। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दीजिए। Sir, in growing children, as you said, myopia is the most common refractive error. ज्यादातर बच्चे शॉर्ट साइटेड होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं दिखा, डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप कराया, दिखला कि -2, -1, कभी कभी 4-5 तक पावर आती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द आई। जैसे बच्चे में बहुत ग्रोथ हार्मोन्स हैं, बच्चे की बॉडी ग्रो कर रही है, तो 3 साल के बाद पावर वो 0 को ओवरशूट होके माइनस बढ़ती चली जाती है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री की वजह से,
कभी कभी कुछ सिस्टमिक डिजीजेस जैसे मार्फन सिंड्रोम या ऐसे कोई डिजीजेस हैं, डाउन्स हैं, प्रीमेच्योर बच्चों में भी मायोपिया के ज्यादा चांसेस हैं। कभी कभी बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, जबकि आरओपी इतनी सिवियरिटी का नहीं पाया गया होता है। So myopia can be picked up very early by simple eye checkups, and vision can be corrected. As I said, थोड़ा सा अंडर करेक्शन रखती हूँ मैं ज्यादातर ऐसे बच्चों को, क्योंकि दूर का परफेक्ट ना भी देख पाए, उनकी कुछ नजदीक का अकोमोडेशन की आदत बनी रहती है और आई स्ट्रेन नहीं होता है. And the simplest and the best way is spectacles because it is temporary, and we know these powers increase when the child grows. 4-6 महीने में पावर थोड़ी बहुत बढ़नी, साल में कम से कम 0.5 बढ़नी कुदरती है, as expected when the child is growing. So that can save the expense on the parents. Spectacles are relatively less expensive than a surgical technique or contact lenses. It can be managed and maintained hygienically by children without the need of parents fussing over it. So growing children, I would advise रेगुलर चेकअप करके करेक्ट पावर स्पेक्टिकल्स की पहने, दैट इज द बेस्ट वे. बट एज आई सेड इन दिस लास्ट एग्जांपल दैट आई वाज सेइंग, एक आई में 0 पावर, दूसरे में 6 पावर, जो इतना डिफरेंस कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता, एडल्ट्स भी, वहां हम अर्ली एज में मदर्स को ट्रेन करके कॉन्टैक्ट लेंस भी देते हैं जहां पर एसिमेट्रिक पावर है. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट अदर वेज ऑफ करेक्शन लाइक सर्जरी, where we can do a refractive lens exchange, we can put a intracameral lens where a lens can be put on the natural lens surgically, or LASIK laser. That usually comes when the power has increased to its maximum. लड़का या लड़की पूरी अपनी हाइट अटेन कर चुके हैं 18 से 21 साल की एज में, पावर 6-8 महीने से बड़ी नहीं है, then we go for temporary procedures like surgical laser or ICL lenses. ओके, लेसिक लेजर जो आपने बताया, लेजर हर आदमी आज जो हर बच्चा है वो चाहता है मेरा ये लेसिक लेजर हो जाए और मेरी आँख ठीक हो जाए एकदम. तो थोड़ा इसकी भी बेसिक्स बताइए, क्योंकि बहुत सी बार ये लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमने लेसिक लेजर करा दिया फिर दोबारा इसका नंबर चेंज हो गया. कोई कहते हैं कि आंखें फिर दोबारा से खराब हो जाती हैं या आँख वीक हो जाती हैं. ऐसे बहुत सारे मिथ लेसिक लेजर को लेके हैं, जो मैं चाहूँगा आप उस बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं. एक तो 18 ईयर्स प्लस करना है, किन बच्चों में करना है, किन बच्चों में नहीं करना. सर ये डिसीजन लेसिक लेजर का इज अल्टीमेट, इट कैन हैपन ओनली वंस. उसमें सब्र की जरूरत है, डॉक्टर के बिहाफ पे भी, पेरेंट्स के भी बिहाफ पे. बच्चे भी आजकल बहुत मैच्योर डिसीजन लेने लगे हैं. तो जब पावर स्टेबलाइज हो चुकी है, अगर हमारे पास कोई बच्चा जस्ट 18 क्रॉस करके भी आता है, हम कहते हैं 6 महीने और देख लो, सब अपने पेपर्स मेंटेन करें, जो ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन के पेपर्स हैं फाइल में शुरुआत से मेंटेन करें, so that we know the trend of the increase of the power, and we take the decision only after the power has stabilized, be it at 18, be it at 22. So power stabilize होने के बाद ही ऐसे परमानेंट प्रोसीजर का डिसीजन ले जाए. प्लस देखिए, ये बड़ा लेसिक लेजर का डिसीजन लेना बड़ी जिम्मेदारी का काम है. एक रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी से पहले मैं इतना नहीं सोचती, अगले दिन सुबह सर्जरी की टाइम दे देती हूँ. बट वहीं जहाँ लेसिक लेजर करना है, एक यंग एज के बच्चे का या यंग एडल्ट का डिसीजन लेना जो ऑलरेडी परफेक्ट है, चाहे वो स्पेक्टिकल्स से हो, उसकी आंख पे कोई प्रोसीजर करना, तो वहां मुझे सोचना पड़ता है दैट आई शुड डू नो हार्म. मैं बच्चे को कोई खतरा या नुकसान नहीं दे सकती अगर फायदा नहीं दे सकती. सो आई डू मल्टीपल चेकअप्स बाय मल्टीपल मशीन्स. आई टेक माय टाइम. मैं उनका रेटिना चेक करती हूँ, कहीं वो कमजोर तो नहीं है, कहीं कोई रेटिना में होल्स तो नहीं है, कॉर्निया में कोई दाग तो नहीं है. पावर एग्जैक्ट बार बार नापी जाती है अलग अलग मशीन से. कॉर्नियल मैपिंग, एक मशीन अब मेरठ में अब हमारे पास है, पेंटाकैम. ये एक जर्मन मशीन है जिसमें कॉर्निया की मैपिंग करी जाती है बड़ी एडवांस टेक्निक से, क्योंकि लेसिक इज ऑल अबाउट रीशेपिंग द कॉर्निया टू अचीव 0 पावर और गेट फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस इफ नॉट 0 पावर. सो ये सब मैपिंग करके श्योरिटी ले लेना कि आगे जिंदगी में कभी भी आई स्पेस का कोई नुकसान ना हो आगे जाके भी. जैसे एक डिजीज है केराटोकोनस, जिसका खतरा बहुत हाई पावर को लेसिक से अगर करा जाए तो एक बन सकता है. तो वी हैव टू रूल आउट ऑल दैट कि आगे जाके प्रेगनेंसी में पावर बढ़ने में किसी भी टाइम पे आईज पे कोई नुकसान ना हो, कोई खतरा ना आए. तो ये सब चेक करके ही लेसिक करा जाता है, और तभी करा जाता है जब पावर मैक्सिमम हो चुकी है और नहीं बढ़नी है.
क्या कुछ केसेस को रिपीट भी करना पड़ता है? जैसे एक बार लैसिक हो गया, फिर 1-2 साल बाद उसको अगर पावर में फिर डिटोरिएशन आ गया तो फिर दोबारा करा जा सकता है, या उन्हें दोबारा स्पेक्टिकल्स के लिए जाना हो? सर रिपीट प्रोसीजर्स लेसिक के बाद करना बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि आपने कॉर्निया को ऑलरेडी थोड़ा थिन कर दिया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सब्र से पावर पूरी बढ़ने दें। बट जस्ट इन केस ऐसा होता है तो आजकल हमारे पास बड़ी थिन फ्लैप टेक्निक्स ब्लेडलेस लेसिक जैसी आ चुकी हैं, जहां पर हम मार्जिन छोड़ते हैं कि पर्टिकुलरली गर्ल्स में पावर अगर आगे प्रेगनेंसी में फिर बढ़ गई और दे वांट टू स्टे फ्री फ्रॉम ग्लासेस, yes it can be corrected if found safe. That needs recalculations again. ओके, तो आपका कहना ये है कि लाइफ क्लियर कराने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और अपना प्रॉपर चेकअप जो आपके स्पेशलिस्ट कह रहे हैं उसको फॉलो करें, राइट? Sir, बड़ी कॉमन बीमारी है थायराइड डिसीज, और कहते हैं उसके भी कुछ साइन आंखों में दिखते हैं, जब थायराइड ज्यादा बनता है तो भी और जब थायराइड कम होता है तो भी। तो कुछ इस बारे में बताइए डॉक्टर। सर थायराइड बच्चों में अगर मैं बात करूं 2 स्टेजेस पे मिल सकता है। एक बिल्कुल बर्थ पे बच्चे का थायराइड ग्लैंड डेवलप ही नहीं हुआ, थायराइड हार्मोन से नहीं है, या मदर में हाइपोथायराइडिज्म था सिवियर। तो थायराइड हार्मोन्स आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं इन चीजों में कि वो क्या क्या बॉडी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। वो ब्रेन तक पे इफेक्ट कर सकता है और इसका लक्षण आंख से भी पिकअप करा जा सकता है। अगर भौएं गायब हैं और आपने देखा बच्चा क्लिनिक में लाया गया पेंसिल से भौं बना के, बच्चे के बाल जल्दी जा रहे हैं, तो ये सब अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एट बर्थ भी हो सकता है और आप इन्हें सप्लीमेंट करके आप इनका डेवलपमेंट नॉर्मल कर सकते हैं। इसके एक्सपर्ट आप मेरे से ज्यादा हैं। वहीं पर हाइपरथायराइडिज्म जो ज्यादातर हाईलाइट करना चाहूंगा, सर देखिए इंडिया के अंदर इंसिडेंस है 1 out of 2500। ओके, सो हाँ, दैट स्टिल हाई सर। 2000 से 2500 में एक बच्चा थायराइड का पीड़ित है, और 3 दिन से लेके 14 दिन तक इसका टेस्ट कराना अनिवार्य है। तो अगर आपके बच्चों का या आपके जाने वाले बच्चे का थायराइड का चेकअप नहीं हुआ है तो एक सिंपल टेस्ट TSH का जरूर 3 दिन के बाद उसका कराएं, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो हाइपोथायराइडिज्म वाले बच्चे होते हैं, जो जिनमें थायराइड हार्मोन कम है, वो देखने में सेम ही दिखते हैं। जब वो पकड़ पाते हैं, जब वो बहुत साफ हो गई या बाल झड़ने लगे या बच्चा केराटिन बन गया या बच्चा सुस्त हो गया, तब तक बहुत लेट होता है। और ये मेंटल सबनॉर्मेलिटी वापस उसका अगर ट्रीटमेंट के बाद पूरे नॉर्मल नहीं लाई जा सकती है। तो दिस इज अ वेरी प्रेशियस टाइम। फर्स्ट 2-3 मंथ्स आप पैदा होते ही 3 दिन के बाद थायराइड का चेकअप जरूर कराएं। प्लीज कंटिन्यू। So the other age that can be affected by thyroid hyperthyroidism is by hyperthyroidism. Growing children, so कहीं कोई ग्लैंड ओवर एक्टिव होने की वजह से थायराइड लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए एंड उसमें पर्टिकुलरली आई को खतरा है। यू नो आईज बहुत बल्जिंग हो जाएंगी, इरिटेबल हो जाएंगी, कभी कभी लाली भी आ जाएगी, और द वर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये डिजीज बहुत तेजी से बढ़े और काबू में ना कर लिया जाए तो इसमें आंख की नस दब के रोशनी तक जा सकती है। सो ऐसे लक्षण आने पे फिजिशियंस, पेडियाट्रिशियंस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पेरेंट्स, जनरल फिजिशियंस जिनको जीपीज जो पेरिफेरी में भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनको अलर्ट करें, पेरेंट्स को टेस्ट कराएं और स्पेशलिस्ट के पास भेजें कि शारीरिक बीमारी काबू में करी जा सके और उनसे जो दुष्प्रभाव आंख पे या ब्रेन पे हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करा जा सके। कि आपने बहुत बताया थायराइड के बारे में, और जो हमारी इस प्रोग्राम का एम है बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करना है, आपकी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाना है। जैसे कि डॉक्टर कोपल ने बताया, लेसिक लेजर कराना हर एक आदमी का, जिन बच्चों की चश्मा लग रहा है वो सब उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका हम लेसिक करा देंगे। तो कब कराना है, कैसे कराना है, ये सब हमने क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। और आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप डॉक्टर के पास दवाई लिखवाने की इच्छा से ना जाएं, चेकअप कराने की इच्छा से जाएं। बिकॉज दिस इज सिक केयर एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, आप बच्चे का चेकअप अगर रेगुलर कराते रहेंगे, जैसे डॉक्टर कोपल ने बार बार बताया, तो जो प्रॉब्लम एक छोटे स्तर पे पकड़ी जा सकती है और वो बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है। बच्चों के अंदर फ्रीक्वेंट चेकअप ज़्यादा चाहिए, बट जनरली पेरेंट्स क्या होता है, जैसे बच्चा आएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, लूज मोशन कर रहा होगा बच्चा, तब उसकी माँ बाप कहेंगे कुछ खाता नहीं है, मट्टी खाता है।
सो दैट टाइम जो फोकस है वो एक्यूट इलनेस पे है। अब वो इतने दिन से अगर मट्टी खा रहा था तो वाई आर यू नॉट कॉशियस अबाउट इट? तो आप एक्यूट केयर में विश्वास मत कीजिए। एलोपैथी में भी और पैथियों से ज़्यादा ताकत है, और हम लोग एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं। बट आप हमें एज इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हो सकते। आप रेगुलर चेकअप कराइए, और बच्चों का खासकर, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को कह भी नहीं सकते हैं, उनमें जो कुछ कमी होती है वो बहुत लंबे समय तक चल जाती है। और ये बड़ा अनकॉमन नहीं है, सब बच्चों का, जो बच्चे चश्मा पहनते हैं उनकी ये स्टोरी निकल के आती कि वो 2 साल 3 साल से हिंट दे रहे थे पेरेंट्स को, और पेरेंट्स उस बात को ध्यान नहीं दे रहे थे सिर्फ चेकअप ना कराने की वजह से, या उनको लगता था बच्चा तो ऐसे ही कह रहा है, फैशन में कह रहा है, इसे चश्मा पहनने का शौक हो गया है, पिक्चर से इन्फ्लुएंस हो गया है, इस तरह से कह के उसको वो डेफर कर देते हैं। बट अदरवाइज आप अपने बच्चे, एक एक दो दो बच्चे, पहले तो थोड़े ज़्यादा होते थे, शायद प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और प्रॉपर उसकी आइज चेक कराइए। ये हमारी आज इस टॉक का मैसेज है। और स्कूल में जाने से पहले जरूर आप उस बच्चे का आई चेकअप जरूर कराएं। दिल्ली के अंदर कुछ स्कूल हैं जहाँ बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप जरूर होता है एडमिशन लेने से पहले। अभी हमारे शहर में ऐसा कंपलसरी नहीं हुआ है, जस्ट पेरेंट्स डायरी लाते हैं और हमसे जबरदस्ती साइन करा के ले जाते हैं कि इस पे साइन कर दीजिए डॉक्टर साहब, अपना नंबर लिख दीजिए, एंड वो कोई चेकअप नहीं कराते हैं। इवन यूएसए का फॉर्म मिलता है, कोई भी फॉर्म मिलता है, उसमें आइज चेकअप का भी एक हेडिंग होता है, एग्जामिनेशन का भी हेडिंग होता है। बट हम कस्टमरी जो अपने जानने वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे प्रेशर डालते हैं कि भाई आप इसे साइन करके भर के दे दीजिए। So this is not right. This is not healthcare. This is what can I say? But this is not healthcare. And आप चेकअप्स को वैल्यू दीजिए तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। दीपमान आपके पास बताइए। इसमें एक लाइन कहूंगी, हम इंश्योरेंस कराने कभी एक्सीडेंट के दिन नहीं जाते, हम इंश्योरेंस पहले कराते हैं। एंड हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली इज बाय स्क्रीनिंग चेकअप्स। अगर आप अपनी आई की स्क्रीनिंग करा रहे हैं, हेल्थ चेकअप्स करा रहे हैं, डायबिटीज के लिए शुगर चेक करा रहे हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए रेटिना चेकअप करा रहे हैं, द डिजीज विल नॉट गो टू अ वेरी एक्सपेंसिव और ब्लाइंडिंग कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। इंडियन कल्चर सुनेंगे आप, जो ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे बोलेंगे भाई मैं फालतू में चेकअप नहीं कराता, मैं किसी चक्कर में फंस जाऊंगा। मतलब उन्हें लगता है ब्लड शुगर चेक कराई तो डायबिटीज निकल आएगी तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी। बट दिस इज रॉन्ग। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको दवाई खा के उसे कंट्रोल करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो कल को आप बड़ी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। दीपमान आपके पास कोई सवाल है डॉक्टर कोपल के लिए? Yeah, thank you, Dr. Kopal, for your advice, and Dr. Anuj sir putting the right kind of question, which we all look forward for a solution. The most important thing which you have raised today, we always look forward for the betterment of our children, and sometimes we use our own way of treating the child. We have only few questions. Most of the questions have been answered in the previous session, and today also you covered quite a lot. We will just have two questions, very precise, ma'am, from Mr. Vijay Jaishwal. He's asking, 6 months old baby try to avoid looking towards the sky and far sight. Is it okay? So this is photophobia. Photophobia can be normal in a child having a very fair complexion and living in altitudes of India where the UV lights are at very high, strong levels. There, photophobia can be normal, but it can also be a sign of severe blinding conditions like congenital glaucoma. So अगर बच्चा बाकी बहुत फेयर कम्प्लेक्शन की वजह से, बाकी लोगों में भी घर में ऐसी कंडीशन है कि चौंध ज्यादा लगती है, बच्चे में लग रही है, तो यू कैन रिलीव देम बाय गिविंग मॉडरेट लाइट। बट इफ इट इज सो मच दैट बच्चे घर की नॉर्मल लाइट की कंडीशंस में भी अनकंफर्टेबल है, तकिए के नीचे मुंह छुपा रहे हैं, साथ में और आंख के लक्षण है जैसे आंख से पानी आ रहा है, तो गो टू योर डॉक्टर। Thank you, doctor. There is one more question from Devansh. Is asking for the 8-year-old son who is generally, his eye seems dry. Can I use any drop or consult? I think last time you have referred to use some tear drop. Any specific advice for Devansh? So preservative-free artificial tears. Ask for preservative-free artificial tears. You can get it off the counter. You can use it just as safely like drinking water.
प्यास ज्यादा लगती है तो 4 ग्लास पानी पीते हैं, प्यास कम लगती है तो कम से कम 2 ग्लास पानी पीते हैं। तो जिनको ड्राई आई की शिकायत है, कम से कम 2 बार, जरूरत पड़ने पे 4-6 बार भी कंफर्टेबली साल्ट भर डालिए। These can be used for the whole family in any age groups. Of course, separate vials for separate members of the family. So you can buy it off the counter and use it for dry eye and keep yourself comfortable. Thank you, doctor. डालें तो आपको आंख ऐसे नहीं खोलनी है, लोअर लिड पे खोल के एक बूंद डाल दीजिए, और जो इंडिया के अंदर बूंद आती है वो थोड़ी सी लार्जर साइज की है, अदरवाइज इट इज रिक्वायर्ड 25 मिलीलीटर, माइक्रो मिलीलीटर, दिस इज 50 माइक्रोलीटर। सो ऑलरेडी ड्रॉप डालें। अब बता दीजिए आई ड्रॉप डालने का सही तरीका बता सर दीजिए। नीचे जो आपने कहा बिल्कुल परफेक्ट था सर। नीचे की पलक खींच के ऊपर देखना है, आप दूसरे आंख से खुद ड्रॉप डाल सकते हैं। ड्रॉप की जो टिप है वो आपकी पलकों पे या कहीं फिंगर पे कहीं भी छूनी नहीं चाहिए, फिर डायरेक्टली उसको कैप करके रख दीजिए। ज्यादातर ड्रॉप्स पे लिखा है 1 महीने से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप उसकी टिप को कहीं टच नहीं कर रहे हैं, आंख पे उंगली से डायरेक्टली कैप करके रख रहे हैं, और अगर फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। समटाइम दीज ड्रॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव, जैसे एलर्गन, एल्कॉन की इंटरनेशनल ब्रांड्स की अगर आप खरीद लेते हैं तो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप सेफली हाइजीनिकली उन्हें यूज करेंगे, यू डोंट हैव टू वेस्ट देम, यू कैन यूज द होल वाइल इन 1.5-2 months also. Right, Dr. Kopal, thank you so much. Dr. Anu sir, you always reiterate and always remind the parents, do not do self-medication. Many times we come across maybe over-the-counter application which are, we feel it is absolutely safe, but how dangerous it can be. We are going to play a voiceover of a particular case, which is a definite listening for all of us. You can all read through the same from the social media post from Dr. Anuj Rastogi sir. So we have just recreated it as a voiceover. Please go through it, and here it is for you. Every day may not be wonderful, but there is something wonderful in every day. So it depends on you, how you see it. Little heart matters. Children are not miniature adults. They have a unique physiology and express their emotions differently. Drugs, if used empirically, may cause poisoning. Recently, I treated a 22 days old child with mild cough, assumed by mother as pneumonia. She tried to cure with application of Vaporub, and the BOA also applied some more rub. Within an hour, the baby became serious and started having abnormal eyes and lip movements. His whole body was flickering, and family rushed him to the hospital. At hospital, when he reached us, baby was not breathing. His eyes were dilated. Limbs were cool, as if life had stopped. His heart was beating. So we intubated and put him on ventilator support. Child was alive, but no movement or reaction to pain. The diagnosis was tough, as we had no clue. I tried to understand what was I treating. Was it sepsis or meningitis or brain hemorrhage? I talked to the family and explained the risk of death. All of them were shocked, as I was not comfortable in explaining all this to them. I gathered courage and started inquiring about all the events that happened until baby reached to this state. Baby was well built and on mother's feet, which itself rules out many illness. There was no fever. It technically ruled out any infectious cause for deterioration. I reviewed his previous treatment. I still failed to understand such a deterioration. A child who was smiling an hour ago was now on a ventilator and struggling for life. With my previous experience of about 3 decades now, I could guess it might be poisoning to some drug, some oil, some cream. People attempt using many therapies to children according to their belief systems.
Slowly, I was progressing towards a diagnosis after almost ruling out all the other common causes. My heart was convinced about drug poisoning. My mind was running fast to know what was the main precipitation factor. Finally, on repeated history taking, they gave detail of repeated usage of Vaporub to relieve his cold. Now I was clear. It is camphor poisoning. I now knew it was now going to be a fight for life for at least 1 week. Yet I was hopeful. There is no test to prove my diagnosis. I ruled out other illness by tests. All tests were normal. On day 2, child began moving his limbs and eyes were reacting to light. I was now happy and hopeful for child. He remained on ventilator for 5 days and on oxygen for next 7 days and safely discharged. Take home message for all parents and grandparents. Do not do anything empirically, whether feeding or treating a minor illness. Here it was camphor poisoning. Vaporub has camphor as the main ingredient. A neonate has larger skin. It is 3 times bigger than our skin. Drugs are easily absorbed and may cause poisoning. It was a minor viral illness, which turned into a life-threatening illness with camphor application. Thank you. Thank you so much, Dr. Anu, sir. Sometimes it's very, very important. We believe we know everything, but actually we make a mistake many a time. Thank you, Deepman. Any precise advice before we end the day? Don't treat your children empirically, and we are there to serve you. And you can go like we have advised eyes checkup, and eyes is the most important part where you will find fallacies, where you will find lacunas, and when you go to the specialist, you will find out the remedy also. Even I kept on saying to my grandparents, I have some problem. I can't see um, places which are across the road, roads across the road, but they were not taking me serious. So when I started using back, it was one plus. I mean, already I have crossed one diopter, minus one diopter, and then I have started using spectacle. सो ये सबके साथ होता है. आप अपने बच्चों का राइट टाइम पे चेकअप जरूर कराइए और चेकअप को ज़्यादा वेटेज दीजिए दवाइयों से. Thank you, Dr. Anu, sir, and thank you, Dr. Kopal Mithal. And I'm requesting all the attendees, do not miss the next episode of Cover Page Cover Story. We are going to have with Kaveri Banga. She is been teaching many of the kids for yoga. It's more than a year. The kids are celebrating their annual event as well with Cover at home at I'm the Best Mom. So looking forward all of you to see on next Thursday. And thank you so much for the evening. Thank you, Deepman. Thank you. Thank you. Good evening. Good evening to all.